Acupuncture points for breathing problem or breathing issue. Do follow us on social media platform and be a part of Acupuncture or Cure family. हमारी वीडियो कई सारे सबटाइटल्स में अवेलेबल है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, उर्दू, पोर्चुगीज, फ्रेंच एंड मेनी मोर. डू चेक इट आउट. ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ब्रीदिंग इशू. हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं जितनी हमारी बॉडी में ज़रूरत हो. माइल्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है बिकॉज ऑफ कोल्ड और नोज ब्लॉकेज, बट ये कंडीशन कोई बॉडी डिजीज की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि लंग प्रॉब्लम्स, निमोनिया या अस्थमा. इस वीडियो में हम कुछ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स देखेंगे और रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फुट, अ मुद्रा एंड एडिशनल थिंग्स जो आपको हेल्प करेगी विथ ब्रीदिंग इश्यूज. सो चलो स्टार्ट करते हैं. REN 22 एक्यू पॉइंट नेक पर दोनों कॉलर बोन के बेस में लोकेटेड है. पॉइंट SP10 पैर पर नी कैप से 3 फिंगर्स दैट इज 2 कुन ऊपर और इनर साइड पर है. रेफरेंस के लिए पिक्चर को देखें. LU6 पॉइंट. ये पॉइंट एल्बो जॉइंट से 7 फिंगर्स नीचे और थंब की लाइन में लोकेटेड है. एक्यूपंक्चर पॉइंट LU9 is located on the wrist crease, thumb के साइड पर just behind the bone in the depression as clearly shown in the picture. नोज के ब्रॉड पार्ट के साइड में ये पॉइंट लोकेटेड है इन द डिप्रेशन. एक्यूपंक्चर पॉइंट ST36 नी बेंड करने पर लोअर बॉर्डर ऑफ द नी कैप से 4 फिंगर्स दैट इज 3 कुन नीचे और 1 फिंगर विद आउटसाइड फ्रॉम द लेग बोन टीबिया ये पॉइंट मिलेगा. आप रेफरेंस के लिए पिक्चर को देखें. नोट, आप जिमी या ब्लंट एंड ऑफ द पेंसिल से भी प्रेस कर सकते हो पॉइंट्स को.
60 to 80 times for 1 to 2 minutes for 2 to 3 times a day. Do check our description for some effective tools or instruments. रिफ्लेक्सोलॉजी ऑफ फुट, आप रोलर्स को भी यूज कर सकते हो टू मसाज ऑल द पॉइंट्स टुगेदर. रिफ्लेक्सोलॉजी ऑफ हैंड, आप ये पॉइंट्स को प्रेस या मसाज करें 5 मिनट्स के लिए दिन में 1 से 2 बार. मुद्रा, ये मुद्रा का नाम है हस्ता मुद्रा. आप ये मुद्रा को 15 से 20 मिनट परफॉर्म करें या फिर एज पर योर कन्वीनियंस फॉर 1 to 2 times a day. एडिशनल थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, एक्स्ट्रा चीज़ों का भी ध्यान रखें या इसे भी अपनी रूटीन में ऐड करें, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग कॉफ़ी समटाइम्स, क्विट स्मोकिंग. अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हो तो हमारी वीडियो हाउ टू क्विट स्मोकिंग देखें, विच इज़ गिवन इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लूज सम वेट, अगर आप ओबीस या ओवरवेट हो तो आप हमारी वीडियो ओबेसिटी देखें जो हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है. ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. Do let us know your views in the comment section below. See you in the next video and also kindly share and subscribe. Bye bye.